बात करते हैं, they have some criteria for the certification and it includes, या इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है हमारे पास, इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशन है, ठीक है, और इसके अलावा जब दो चीज़ों को आप मीट करते हैं क्राइटेरिया को, then they have an exam for you guys to pass, then उसके बाद आप कोई भी सर्टिफिकेशन अचीव कर पाते हैं. So this is the basically brief introduction of what is certification. And certificate normally just a participation certificate you guys have whenever you attend the training. So इसका basically फ़ायदा ये होता है organizations को, like अगर मैं बात करूँ ASP की या CSP की, तो we have multiple hiring opportunities worldwide. पाकिस्तान में बात कर लें, Middle East में, even in the US, Canada or Middle East market में, तो whenever they have an opportunity in their organizations, then they या ये अगर किसी consultant के through वो opportunity को या hiring को लेकर चलते हैं, तो उसमें सबसे पहले उनकी requirement safety professionals के लिए ASP या CSP का filter लगा दिया जाता है. तो जो लोग ASP या CSP certified नहीं होते, वो initial filter के अंदर ही निकल जाते हैं. So certification always helps you कि आप एटलीस्ट अपने आप को शॉर्टलिस्ट कर सकें इंटरव्यूज के लिए. तो इसलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, अमेजोन हो गया या इवन के PMI, अगर मैं अपनी बात करूं, एग्जांपल दूं आपको, तो जब मैंने ज्वाइन PMI, तो उसमें भी इसी तरह था कि आई जस्ट शॉर्टलिस्टेड ड्यू टू माय एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशन आई हैव. सो दिस इज द थिंग जो कि आपको हेल्प आउट कर रही होती है फिल्टर के दौरान, कि आप एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएं इंटरव्यूज की, बिकॉज आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आप इंटरव्यू के लिए बैठ सकेंगे. तो ये चीज़ें हैं जो कि सर्टिफिकेशंस आपको सपोर्ट कर रही होती हैं जब भी आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मल्टीनेशनल में किसी भी हायरिंग को परस्यू कर रहे होते हैं. इसके अलावा जो चीज़ें, जो बेनिफिट्स हैं सर्टिफिकेशन के, जो भी सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इसमें आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो एग्ज़ाम में जब भी आप अपेयर होंगे तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम. तो ये कॉन्टिन्यूअल जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, सर्टिफिकेशन आपको हमेशा उसमें सपोर्ट कर रहा होता है, बिकॉज यू डोंट हैव यूजुअली टाइम टू prepare ourselves to study the material, but whenever you have certification in your mind, then you have to study some material and prepare yourself for the exam. So आप forcefully certifications आपको support कर रही होती हैं अपना career build करने के लिए, अपना एक market value को basically develop करने के लिए. तो सिमिलरली कुछ चीज़ें होती हैं जो सर्टिफिकेशन में हम समझ रहे होते हैं कि अगर मैंने एक दफ़ा टेस्ट में अपीयर हो गया हूँ या मैंने टेस्ट कर लिया है, तो वो हमेशा के लिए सर्टिफिकेशन मुझे मिल जाएगी. बट इट्स नॉट लाइक दैट. सर्टिफिकेशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ टाइम बाउंड होती हैं. लाइक अगर मैं ASP CSP की ही बात करें, तो ASP CSP की सर्टिफिकेशन है, इट्स फॉर 5 years. इट्स नॉट अ परमानेंट सर्टिफिकेशन एंड यू हैव टू रीसर्टिफाई आफ्टर 5 years. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सर्टिफिकेशन में देख रहे होते हैं. और आसिफ, प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, कुछ चीज़ें वाई सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी आई हैव ब्रीफली डिस्क्राइब्ड. और जैसे मैं अगर फर्स्ट पॉइंटर की बात करूँ तो डेमोन्स्ट्रेट्स कॉम्पिटेंसी. तो कॉम्पिटेंसी ऑब्वियसली जैसे मैंने बात की है कि हम समटाइम्स वी हैव आवर educational background and certain experience, but when we have a certification, then it builds your competency and gives you extra knowledge. लाइक जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि समटाइम्स हम क्या करते हैं कि उस तरह हम यूजली टाइम नहीं दे पाते हैं जो भी मटेरियल, जो भी कंटेंट है उसको पढ़ने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए. बट ये है कि जब आप सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो सर्टिफिकेशन फोर्स यू टू स्टडी द मटेरियल. एंड सेकेंडली, इट्स एडवांसेस सेफ्टी प्रोफेशनलिज्म. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अपनी, आई वाज अ प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर एंग्रो फर्टिलाइजर्स. Then obviously I had a very strong background regarding safety, but मेरी आवाज आ रही है सबको? Asim, can you hear me? Ji Naveed bhai, we can hear you. It would be better if you can continue in English. We have a foreigner, I guess. So if I talk about the advanced safety professionalism, then because like I was giving an example of my personal experience in Anglo Fertilizers Limited.
So I was working there as a post safety engineer, and obviously I had a very strong background regarding safety because it's a fertilizer sector. But but a systematic approach, whenever you want to do something, some projects, if I'm talking about safety, then you need a systematic approach. Like if I'm doing a PHA, process hazard analysis, I have to use some tools to implement the safety systems in the organization. Then you have to have a systematic approach. Like we use in PHAs what if checklist and HAZOP studies. So these certifications basically gives you the systematic approach in how to use these tools. So it definitely helps you to improve your competency, your safety professionalism, because usually we don't use these tools in our industry, uh, but these certifications uh, teach us how to use them and how to implement practically in the field. And second, the third point is competitive advantage. The same thing that I told you about the filter during the hiring process. Whenever we have any hiring, any opportunity in the organization, then uh, typically organizations ask the consultants to hire somebody, and they told them to what is the criteria for the position. Okay, so then what they do is they ask for the certifications. We need ASP certified professional, we need CSP certified professional, and if they need the high industrial hygienist. So we have multiple certifications that the under the umbrella of BCSP. So it gives you competitive advantage whenever there is an opportunity in the market. And the next one is demonstrates credibility. Okay, like I have 9 years of experience, but it doesn't gives a clear picture of my experience to the organization. But when I have certification, then it means that I have completed the minimum benchmark criteria for the certification. Then it helps to the organization that this person, this individual is capable to implement the safety in my organization. So it demonstrates the credibility of the individual whenever the organizations hire somebody. Okay, and it sets standards definitely, because any certification that we do, uh, it has some requirements like educational background, experience, and some standards to study. And like in ASP and CSP, we have some domains to qualify in the test. So it sets some benchmarks, some standards for the individuals, and helps the organizations. And the last is the pay and mobility. Okay, when I'm talking about certification, then it definitely helps you. What are in your salary packages? It gives you uh, benefit and mobility in your career. Whenever we are having a certification in our career. Okay, Asim, can you please move to the next slide? Okay, this slide is something that is also shared by the BCSP, and they told about what is the difference between the salaries if anybody is having certification of ASP or CSP, other than the and if you are not having certification. So this is a salary survey 2018 done by BCSP itself to support you guys who wants to do a certification of ASP CSP. So this is the thing that supports you, because initially we think we are wasting our money in certifications and definitely the time, but it's not like that. It's basically supporting you guys in improving your career and your salary packages. So I think this is, if anybody has any questions regarding BCSP and my part, then I would like you all to ask. Okay, G, if you have any questions, you can just leave in the chat box, or you can come up by opening your mic. If you want to ask something right now. Okay, I think I should begin. Okay, these are some interesting facts about the ASP and CSP certified in the world, and
rather more alarming facts about the certified people in Pakistan. We only have 27 certified CSPs in Pakistan, and most of them are not even working inside Pakistan. They're in the Middle East, Saudi, and other nations around. So these are, I normally say these are alarming situations because we do have people that are functioning in the safety department, but they don't have the right skill set. And the reason is we don't have the occupational health and safety degree in Pakistan, neither risk management trainings. And if some person is functioning in the domain of safety, he should have some preliminary knowledge about it because he has the responsibility to ensure safe operation and to ensure that everyone working in the field, in the industry is safe. Okay, so there are a number of reasons for these low numbers of CSP and ASP certified. The first thing I think that it's because of lack of interest from the management and the companies we are working at. And one more fact is the high cost of the certification. Huge capital that used to be huge capital. There's some decrease in the cost, but still it is a huge number. Not everyone can bear the fee of the certification. And one more important thing is the lack of guidance from most of the people, either because of professional jealousy or due to some other reasons. They just create a hype. It's known as the ASP and CSP myth. People don't feel comfortable telling others about how to acquire the certification. When I did the certification last year in November, I would repeatedly ask about how to prepare for it, what are the preliminary requirements required to be eligible for the certification. So that was the main reason why we decided to arrange this session to help people out, because people normally have a lot of questions. I'm repeatedly asked on LinkedIn what people don't even know in Pakistan what a CSP certification is. Yeah, and also these low numbers help certain companies to exploit the fact that people do not know what the certification is, and they're charging like crazy number for this. When I started and I made up my mind that I have to do a certification, I contacted a few people in Pakistan, and I was getting these crazy number. Like one person asked me to submit 1,50,000, and he will provide me just some material to study. Which is somehow exploiting our young engineers. Those people who don't know how to do certification, they're just asking some crazy cost. So yeah, moving on to the process, I will now try to briefly explain the process of certification from registration till maintaining a certification. The first part will be how to apply for certification. You need to determine your eligibility. Eligibility is different for ASP and CSP certifications. Once your application is approved and BCSP finds you that you are eligible to sit in the exam, then you need to proceed by purchasing your exam. And obviously the final and the most important part is to pass your examination. So once you sit in the exam and you pass your exam, you need to maintain that certification. It has an annual certification fee. And other than the fee, you have to attain certain points. If you're not able to attain those points, you end up into disqualification of the certification. This in terms of maintaining the certification, this is a good thing, I feel. The reason is because you keep your knowledge fresh by performing certain set of tasks already defined by BCSP. I will talk about this later. Here we have the eligibility criteria for ASP. So you need to have a bachelor's degree. That's the bare minimum. This is the only reason why they call it a gold standard certification. I'm also a NEBOSH certified, but I wasn't approached by industries when I did my NEBOSH. But as soon as I appeared for ASP and CSP exams, the difference was I wasn't approaching industries. Industries were rather looking for someone who already had a certification. So this is the huge benefit of ASP and CSP, and that's why they call it a gold standard certification, because not everyone can appear and pass this exam. So there are certain eligibility criteria. The first one is to have a degree in bachelor's degree is mandatory, or it's preferred if you have a degree in safety, health, and environment. After that, you need to have 1 year of experience.
they prefer to have at least 50% of the your job posting in the safety department. But somehow you can adjust that by preparing a good profile. They just review it, and if you are eligible, so they provide you the rights to sit for the exam. So there is some area to play in this 50% section of the safety. Obviously, if anyone is working inside the safety, not specifically in the safety department, you still can provide reasoning for performing 50% of your task in the safety domain. For example, the people working in the operations department, they still hand over giving away the permits and isolating the equipment. So they're performing their duties in safely manner. So you can adjust a profile in certain manner that BCSP approves. Then there are some ethics and code of ethics for BCSP that includes that if you sit for an exam, they ask you not to share the questions with people that are preparing for the BCSP certification. So this comes in the ethical consideration of the organization. Okay, after ASP comes the Certified Safety Professional Certification. It is the next step after ASP. People normally appear for ASP as it is one of the requirements of CSP. So I'll list down the requirements. The first one is obviously a bachelor's degree. The second thing is to have 4 years of experience. And the third and the most important is to have an ASP certification or some other certifications. There was a misconception initially between people. They used to think that NEBOSH IGC is enough to sit for a CSP exams. That's not true. If you have a NEBOSH IDIP international diploma, then you can eliminate the requirement of ASP. Otherwise, you have to appear for ASP or certain other certifications that are mentioned over here in the last heading. I'll share these slides if you want to review them or if you have any questions. Okay, now moving forward, once we know the requirements and once you know that you're eligible to sit for the exam, the most important thing is to know about the cost involved. Okay, so for ASP certification, you need to submit $160. This is where you file your application and submit it on the website, and they get back to you after 1 week and tell you that either you are eligible or not. If you are eligible, you can proceed with purchasing the exam, and exam costs $350. So this is the total cost you need right now to get the ASP certification. One good news is from January 2020, they eliminated the requirement of getting your degree verified. I myself, I know Naveed Raza, we both got our degrees verified from America because they were not accepting our degrees from Pakistan at that time, and that costed almost like $300. So there's some cut in the cost, which is a good thing for people now willing to pursue for this certification. Then there's a renewal fees that you have to pay every year until 5 years. I'll talk more about it in the later slides. Okay. Okay. Moving on to the CSP certification. Obviously, once you got your ASP certification, you need to pay the same $160 application fees. As I told you, the eligibility criteria is different for ASP and CSP. So this is the same part where you submit your fees and make sure that you're eligible. Once they approve your application, only then you can proceed to the next step, which is purchasing the exam for $350, and then comes the renewal fees that you have to pay till the end of every year. We have talked about how to register for the certification, how to sit for the examination. We will now talk more about the preparation. ASP 10 is the new blueprint that BCSP has issued. Before January, there were 7 domains, and they have increased it to, I think there are 9. Yeah. There is a division of percentage. For example,
The exam will include 11%, 11.5% of the section from advanced science and maths. I normally get questions about the safety management system. People find it difficult to score 17%, and normally few people even fail this section. So because we all are, I suppose, engineers, so we are good in maths, so it's easy to cater the math section, even the fire safety section, but the safety management is somewhere people lack. So this is the most important section where you need to prepare. So there's basically the domains are splitted further from 7 to 9, but the content is more or less same. They have just divided the 7 domains into 9, but the study material and the content is um, the same. Okay, now the exam, it consists of 200 multiple choice questions, takes you 5.5 hours to either pass it or fail it, and the passing percentage is 58 marks. Books are the most renowned book is David Yates, The Safety Professionals. This is the first thing you will study. I normally read it 5 to 6 times before preparing the exam. Then is the book by Roger Broer. These two books are, I think, enough to pass the exam. When I was starting my preparation, few people guided me to study more than 5 to 6 books, which is, I don't think is practical, because you cannot retain all of the knowledge. So I consulted one of my seniors. He gave me a very good piece of advice. And he said, whatever is mentioned inside the blueprint, you need to cover that. Doesn't matter if you do it from a certain book, you read even 10 books, or it doesn't even matter if you just search it on Google. You just need to have the knowledge of these 9 domains. And once you're done reading these 2 books and you are comfortable that you have covered each and every domain mentioned in the blueprint of ASP or even CSP, then you proceed toward the SPAN question books. It contains the detailed questions about each and every domain. It's segregated in the form of 9 domains and contains questions regarding to each domain. That way you can focus on a particular domain. For example, if you're lagging some or you're not comfortable about safety management system, you can just focus on that domain and read SPAN again and again until you are comfortable to sit in the exam. Okay, now we have covered how to sit for the exam, what to prepare and how to prepare. Now, once you attain your certification, you need to submit a recertification fee every year in December. And even after paying certification fee for 5 years, you need to have certain points, like 25 points, to maintain the certification for next 5 years. There are certain tips to maintain or acquire these 25 points. What I'm doing, I'm continuing my education. I'm acquiring master's degree. So the master's degree already has 25 points. Once I will be done with my degree, I will just submit it to BCSP and they will extend my CSP certification for 5 more years. So I'll be capable of maintaining that certification for 10 years. But rest assured, you have to pay the annual registration renewal fees also. What else you can do if you're functioning in your jobs, you can write a research paper on safety. You can attend certain conferences. You can arrange certain trainings. The way we are arranging a training today, you can just take a screenshot and submit to BCSP and they will give you certain amount of points. All these 10 categories have different amount of points, but the most and the highest points are for acquiring education. And that education is basically from USA, no other country. Okay, I'm done with my part. If you have any questions, you can just unmute your mic and ask right now, or just send in the comment section. By the end of the session, we'll be able to answer all your questions.
Good evening, everyone. Ali, I guess you have a question in chat. Would you like to answer it now or at the end of session? Okay, I can see the question, exam package. Okay, I will answer at the end of the session. Asim, please write the question down. Okay, so let me begin with the quality certifications or the quality part of this webinar session. Next slide, please. So firstly, I would briefly explain what is Six Sigma and how it was developed. It was developed by Bill Smith in 1986, and Motorola, the US company, was the very first company to implement the framework of Six Sigma. So what Six Sigma is, it is basically a data-driven approach, and you provide your data to any Excel or any other kind of softwares, and you try to eliminate your defects or waste in your existing process. So if any company says, I deliver best ever product and there is no compromise on quality in my company, then what would be my answer? I would simply say that you might have variations in your system, and obviously it is practically impossible to have no variation in a manufacturing or a production plant. So what you need to do is to minimize those variations and have an optimum quality of your product delivered. So that's why you need Six Sigma. What else Six Sigma does? It helps you to improve your business processes by optimizing the quality of your product, the efficiencies in your system, and to help you sustain your quality of the product. And there are a few successful implementers in the US that are Amazon, GE, Ford, 3M, Boeing, and even the US Army. Yes, you heard me right. It is US Army who has implemented Six Sigma in a very successful way. Next slide, please. So when I say I'm a black belt, does it mean that I'm qualified in martial arts? No. There are certain levels of Six Sigma trainings that are yellow belt, green belt, black belt, and then the highest level is the master black belt. So what is yellow belt? These criteria are basically based on the level of knowledge and experience in the Six Sigma fields, and then how you participate in the Six Sigma projects. If you have a background knowledge of Six Sigma and the tools that are used in the project, then you are known as a yellow belt. But for all the three next Six Sigma levels, you need to pass an exam. So if you are green belt, you need to pass the exam and then you can participate in the project. You need to report to the black belt, who is a project team leader, and then the black belt reports to the master black belt. To seek master black belt certification, you need to have a managerial position for at least 1 year. Next slide. So there are certain requirements to sit in the exam. The first and the very foremost requirement is obviously a full-time position in any industry. It may be any position. There is no limitation on the basic bachelor's degree or anything like that. Obviously, you need to minimize the variations and waste in any kind of process, may it be any cleaning service, any production plant, even in the hospitals, you need to optimize your waste. And every field in this world typically needs to reduce the waste and variations, etc., etc. So you need to have a full-time position and a paid role. You need to have at least 3 years of work experience, and there is then certain cost. For example, members pay around $350, and then the non-members, they pay around $450. For the black belt, you have same kind of requirements, but only a different requirement is you need to have at least 2 completed projects with the signed affidavit. What I mean by affidavit is any black belt anywhere in the world need to approve or sign your form that you have completed those projects and it resulted in reduction of waste or any other monetary benefits.
And then again, the cost for sitting in black belt is, for members, it is around $440, and for non-members, it is $540. What I would recommend is, if you plan on sitting for GB or green belt exam, and then you also plan to sit for black belt, then I would say to purchase the membership for at least 1 year and take both exams in the same year. Yes, it is possible, but you need to work very hard and study, and then practice a lot of Six Sigma tools, implement it in your daily lives and in wherever you work. There is a web link provided at the end of the slide. You can visit this ASQ website and further explore. There are other certain certifications that are other than Six Sigma, but they are also help in optimizing the quality of your organization. So you can also explore those. Next slide, please. Listed on this slide is the salary survey of 2019. And as per this survey, an average engineer in US, he earns approximately $94,000 per annum. But on the other hand, if he or she had a Six Sigma Black Belt certifications, he was able to earn approximately $106K per year. And similarly for Green Belt and Yellow Belt. So this is just the salary package that is the advantage. What I would say is, I did my certification while I was still in Pakistan, and I had no plan of coming to US at that time. As soon as I did the certification, I became very valuable to my company, and then they invested several $1,000s on me so that I may pass the exam. And then also I trained the other employees. Why should any company invest on a person? By seeing his or her interest in a certain field. It was obviously because, so that I may train other employees and train them on the same framework, and in the end they would return value to the company. And when I trained approximately 50 to 60 more employees, they did more Six Sigma projects, and in the end there was monetary as well as other benefits to the company in the terms of reduction in waste and the reduction in the variations in a process. So that was my experience with Six Sigma. If any one of you is interested in reducing waste, variation, any non-value added steps or activities in whichever company you work for or whatever you do, I would highly encourage you to pursue at least Green Belt certification. It would be very helpful not only to improve your knowledge, but it would also improve your net worth with the existing employer, or in terms of pursuing the next better opportunity, or even if you want. I'm sorry, is there any question? You can continue, sir. Okay, so I guess that's the end of the presentation. But I would highly encourage you, if you want to pursue any certification in quality, then I would highly encourage you to at least go for Green Belt. You can study on your own. You can seek any advice from any kind of consultant or a Six Sigma professional. It is doable. You need to pass exam that is approximately 4 hours to 4 hours and 30 minutes, and it contains approximately 100 questions. Few of them are marked and few of them are not, but you are not sure which are marked and which are not. So you need to solve them at the same pace and at the same levels. So yeah, that's all from my side. If you have any questions, you can shoot in the chat, or you can just unmute your mics. Thank you so much, Ms. Sara, for briefing us all about the quality certifications. If anybody has any kind of question, just please write in the chat section, or unmute your mics and just simply ask away. अच्छा, I Any guess kind of question. साले भाई आप ऑन कर सकते हैं माइक अपना?
अच्छा चलें एक क्वेश्चन है कि BCSP का एग्जाम पैकेज है that costs about $600. That is a self assessment. एक उनका सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं. इस तरह की काफी सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं. कुछ एप्स जी मेरा ख्याल अनम्यूट हो गया. पूछें साले भाई सवाल अपना. Yes. Actually, I just wanted to ask about the package which is available at the BCSP site. It is saying that you can have a retest in that package, and there is some self-assessment, I think. I just want to know about that. What is self-assessment, and what is the benefit of that? Okay, BCSP has almost 10 set of self-assessment questions. They contain 100 questions each, and it's more like a simulation similar to the one you will be having on your exam day. So it is your assessment. You will appear for the self-assessment. You will attend 100 questions and you will know where you will stand. If you are scoring 58%, then it's more likely that you will pass the exam and get the certification. Uh, it it's not needed specifically. Can you hear me? Yeah, yes, Okay. I am hearing. Okay, it's an added feature. Okay, it's not something mandatory. There are certain other applications also available online. It all depends upon the capital you have. The more you will invest, the more comfortable you will be on the day of exam. Okay, I know there's an app known as Pocket Prep. If you purchase it, they have a question bank of 600 to 700 questions. There are similar things available online. There are question bank from Span also. So it all depends how much money you have. If you have money, you can spend a lot. So it's good to have, why not purchase as many exams as you could? And rather about the re-examination, if you prepare well, you don't have to think about re-examination. Okay, you won't be spending $600 just to get an option for re-examination. You need to be clear in your mind. You have to prepare well, and it's doable. It's not something that's not possible. So it's better to be positive right from the start, and it requires a lot of determination. Like it takes 6 to 8 months if you're studying on your own, and you're just even if you're working, you won't be able to spend a lot of time studying for your ASP and CSP. So that's the key, how you segregate your time, even doing the job at the day and studying at night. So it's a lot of commitment and determination. I hope I answered your question. Uh, Thank you. Thank you. Just one more clarification. Actually, if God forbid we are unable to pass the exam, then if we have to retake, we have to buy the exam by paying $350 more. Am I right? Yeah, that's correct. So if we are having a package of 600, we will be having an additional benefit of the self-assessment, and we may have the two retakes, like one retake and one actual exam. That's why I just wanted to ask about it. And one more thing, in this self-assessment, either it will be related to ASP, or both CSP and ASP both will be covered in this self-assessment. The actual question is that what sort of difference in the questions in ASP and CSP? Okay, अब मैं आंसर दूं, नवीद रजा दें, किससे आंसर लेना चाहेंगे? पहले मैं इसका ही आंसर कर देता हूं. Any of you would like? मैं उनका एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर हो, नहीं तो कुछ कमी रह जाएगी. मैं Okay, okay. मैं इसका That will be nice. मैं साले में आपको इसका जवाब देता हूँ. इसमें ये है कि सॉर्ट ऑफ अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, लाइक अगर if you have a safety background, like if you're working in a fertilizer, oil and gas and oil refinery, then you will be having a lot of experience regarding safety. So ASP or CSP is not about like you are trying to learn like बहुत कुछ नया नहीं सीखने वाले. इसमें यही वो चीज़ें हैं जो आप प्रोफेशनली अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, इट्स लाइक इफ यू आर लाइक मैंने अभी बताया कि इफ यू आर वर्किंग इन फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एंड रिफाइनरीज, देन यू विल लाइक हैविंग एडिशनल 10 to 20% मोर नॉलेज. बाकी सर आपको ऑलरेडी पता है, बट व्हाट ASP CSP do is it just gives you a systematic approach how to take the safety.
लाइक PHA कर रहे हैं, टूल्स कहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, या अगर बिहेवियर सेफ्टी की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं. सो व्हाट ASP CSP is just about a systematic approach towards the safety. अच्छा मैं Whenever you are इसमें एक implementing. चीज ऐड करना चाहूंगा. अच्छा साले भाई, आपका जो इनिशियल क्वेश्चन था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ASP एंड CSP. अच्छा, obviously ASP requires 1 year of experience and CSP requires 4 years of experience. And the questions that appear on the exam they basically look into these things. The more experienced question, the more complex the question will be. ठीक है. एक चीज से मैं disagree करूंगा. ASP CSP is not like अगर आप industries में 15 years का experience है, you will be able to pass it. एक बहुत बड़ा एक knowledge bank है जिसके लिए it took me 6 to 8 months to study for it. It's not something simple. It's complex. You might be knowing things if you're working in industry, but it's the detailed working. Like even Yes. if there are 4 compressors in your compressor deck, you cannot calculate the noise level of each of the compressor, or you can't calculate the added effect of sound from one machinery to another machinery. But you might know there is some hazard. That's the preliminary requirement if you're working in industry. But to calculate how much of a hazard it is, and to bring it into a quantifiable term just to mitigate it, so this requires some certain skill set, and that is given by ASP and CSP. ठीक है. इसमें काफी आपको पढ़ना पड़ता है. पैसों के अलावा भी बहुत सारे फायदे ये हैं कि आपका एक नॉलेज बढ़ता है बहुत सारा. Yes, actually I am studying the books of Roger. मुझे उसका अंदाजा हो रहा है कि there are more sort of calculations. निबोश में it is more like subjective. लेकिन ASP CSP में ज़्यादा calculations हैं और like you feel like engineer. तो मैं आपकी बात से agree करता हूँ. It means कि ASP और CSP में ASP is more sort of calculations and CSP is more sort of experience questions, that how you utilize that experience in solving the problems. अच्छा, ये Am I right? experience भी है. It's more of a tricky questions. ठीक है. They test your ability to work in that function. They are giving you a CSP certification. ना? It's a certified safety professional from USA. ठीक है. तो US में ना ये preliminary requirement if you want to work in a safety field. तो ये वो सर्टिफाई कर रहे हैं. यू आर सर्टिफाइड, मतलब आप लोगों की जिंदगी से आपको लोगों की उसके ऊपर बिठा रहे हैं कि हाँ आपके अंडर अगर लोग होंगे तो सेफ रहेंगे. तो वो उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं. दे आर ट्रिकी. और जो बुक्स आपने पढ़नी है दे आर सेम फॉर ASP and CSP. देयर इज नथिंग डिफरेंट एंड डोमेन्स आर मोर और लेस सेम. But the type of questions, they are more basic in ASP and they're more advanced in CSP. That's the only difference. Fine. Do Thank you have you. any other question? One more question. Sure. One more question, please. If I am starting, should I start with Yates or with Roger? अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैं पिछले साल से बहुत लोगों को बता चुका हूँ. तो अच्छा, मैं इसके बारे में ना देखिए, मैंने पहले भी अपनी during my presentation I said that it doesn't matter if you study from Yates, it doesn't matter if you study from Broad. I personally feel that Broad is a more comprehensive book. It's more understandable and it's more enjoyable when you study it. Few people think that even the Yates is enough to pass the exam. I agree. Maybe for ASP it might be enough, but CSP, no. You have to study even 1 or 2 more books for CSP. And if you're going for knowledge, then you should start with Roger Broad. If you're like new to the industry and you're not familiar with the terms about safety and health hazard, I think you should start with Roger Broad. But if you already have grip over the subject of HSE, I think then Yates might be enough. But it depends upon the individual, how much knowledge he already has. And I think I hope I answered. हाँ, इसमें साले मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ. आई टोटली एग्री विद अली कि इट माइट बी कि आप सिर्फ Yates पढ़ें तो पास हो, बट इट्स डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर लाइक पासिंग एग्जाम. के आप दोनों बुक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम. तो
आई विल रिकमेंड कि आप दोनों बुक्स पढ़ें अगर आप स्पेसिफिकली सीएसपी के लिए, बिकॉज फिर देयर आर थिंग्स जो कि येट्स में कवर होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो येट्स में नहीं हैं, जो रॉजर ब्रॉड में लिखी हैं। तो वो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि स्पेसिफिकली फॉर सीएसपी यू शुड रीड बोथ बुक्स, दोनों पढ़नी चाहिए। नहीं, दोनों भी पढ़नी है, इसके अलावा भी चीजें काफी हैं पढ़ने वाली, ठीक है, लेकिन बिल्कुल वो क्वेश्चन आपका ये है कि जी पहले कौन सी शुरू करें, तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसका ऑलरेडी नॉलेज कितना है, ठीक है। अगर तो आपको ये ऐसा ही है कि एक बंदे ने मास्टर्स किया हुआ है तो उसके लिए पीएचडी आसान है, मतलब बैचलर्स को डायरेक्ट आप पीएचडी नहीं करा सकते, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स। मैं अगर कोई बंदा एएसपी कर रहा है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा वो सीधा जो है ना येट से स्टार्ट कर ले, उसके लिए बेहतर है कि इन डेप्थ नॉलेज ले जो कि ब्रॉड में अवेलेबल है। बिल्कुल सही, ठीक, थैंक यू है। वेरी मच। अच्छा, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? यू कैन Yeah, जस्ट अनम्यूट Ali योर Imran माइक्स। here. जी इमरान भाई। I have 13-year experience of operation, and obviously I'm looking after the HSE aspect in the operation department regarding the permit, regarding the health hazard, all the ISO certification, the requirements. So how much time I need as far as my experience is concerned and the job knowledge concerned to prepare and to sit in the exam? इमरान भाई ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आई इट टुक मी लाइक मोर देन 6 months बिकॉज विद द जॉब इट्स डिफिकल्ट टू स्पेयर सम टाइम। डेफिनेटली आपका काफी एक्सपीरियंस है, हर चीज काउंट करती है, दैट माइट हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्जाम। लेकिन जो पूरा एक डोमेन का स्किल सेट है जो आपने एक दफा तो गो थ्रू करना है एटलीस्ट, उसमें टाइम लगता है। लाइक ईच ऑफ द बुक इट कंटेन्स 700 to 800 पेजेस। अब उसको आपने रिव्यू करना है, मेरा ख्याल है इट माइट टेक यू अराउंड 4 to 5 months जस्ट टू रिव्यू देम एंड बी एबल टू सिट फॉर द एग्जाम। अच्छा, इसी हवाले से ये है कि अब सेफ एनवायरो ने हमें अप्रोच इसलिए किया था, मैनी पीपल इन पाकिस्तान दे आर ऑफरिंग, आई टोल्ड यू, लाइक 1,50,000 2 लाख, और उसमें कोई भी लाइव लेक्चर्स नहीं लेता, रिकॉर्डेड दुनिया में कोई लाइव लेक्चर्स नहीं लेता। तो हमें अप्रोच इसलिए किया गया था ताकि हम एक तो वेबिनार कराएं, लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेबिनार होते रहेंगे होपफुली वंस एवरी मंथ। और उसके बाद ये कि हम एक कोर्स भी स्टार्ट करें विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल, जिसमें जो मुझे बहुत लोगों से स्पेशल अलहदा से रिक्वेस्ट आती है लिंक्डइन पे, कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ईजी हो, 1-2 घंटे के लिए लेक्चर लिए और उनको काफ़ी चीज़ें कवर हो जाए, एग्जाम में बैठ सकें। तो उसके लिए हम एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली अगर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ ऑडियंस हमारे पास होगी तो हम लाइव लेक्चर्स लेंगे जिसमें हर चीज़ को कवर भी करेंगे। तो उस हवाले से भी हम सोच रहे हैं। Okay, fine. लेकिन ये आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आपको किसी की जरूरत है। बुक्स मैंने बता दी हैं, डोमेन्स का बता दिया, आपने जिस डोमेन्स को पूरा पढ़ना है और बुक्स पढ़नी है, दैट्स इट। Okay, I think you will share the books which are required to prepare जी for the बुक्स examination, शेयर कर देंगे, and ये all other ईमेल। data which might be helpful. जी to जरूर prepare. शेयर करेंगे, ये ईमेल एड्रेस और वो लिंक्डइन का पेज हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे तो सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देंगे। Okay, thank you. Any other question? No, thanks from my side. Which I want to ask a question. Sure. Ali Ayub साहब, sorry for late joining the webinar. मेरा नाम सिकंदर अस्कानी है, मैं हब पावर स्टेशन में जॉब करता हूँ। काइंडली मुझे ये बताएंगे आप कि ये एएसपी सीएसपी की प्रिपरेशन के हवाले से जो आप करा रहे हैं, इसकी चार्जेस वगैरह का थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि मैंने लेट जाने का, हो सकता है आपने ग्रुप में शेयर कर दिया होगा, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी, चार्जेस का इसलिए मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि ये बेसिकली एक फ्री वेबिनार था, तो हम इसमें कॉस्ट वगैरह शेयर नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि आपने क्वेश्चन कर लिया तो चार्जेस हमारे $50,000 हैं। मैं क्योंकि अमेरिका बैठा हूँ, हर चीज़ वो डॉलर में आ रही है ज़हन में, तो $50,000 है, और इसमें सारा डाटा भी प्रोवाइड करेंगे और डिटेल लेक्चर्स हैं। बेसिकली डिटेल लेक्चर्स इसलिए मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ कि अभी दुनिया में जो भी लोग ये ऑफर कर रहे हैं वो दे आर चार्जिंग मोर देन $1,000 इवन इन पाकिस्तान,
and they just provide you recorded lecture, 5 to 10 lectures, and they tell you how to study and from where to study. तो इसमें जो हम लेके चलेंगे वो ईच एंड एवरी टॉपिक को इन डिटेल लेके चलेंगे. सारे जो पैनल जो आपके ट्रेनर्स होंगे वो CSP सर्टिफाइड होंगे. और होपफुली हाँ, इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा, जो कि अलहदा से आपको परचेज करना पड़ता है एप्स की फॉर्म में. BCSP का जो साले भाई ने क्वेश्चन किया था, सेल्फ असेसमेंट पैकेज, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. वो सारी चीजें जो कॉस्ट पे करके मिलती हैं, और दैट विल बी ओनली इन 50,000 रुपीज. बट इट ऑल डिपेंड्स, अगर हैंडसम अमाउंट ऑफ पीपल होंगे तो तभी वो एक सेशन स्टार्ट हो सकता है. एक दो लोगों के लिए वो, क्योंकि एक बड़ी एक एफर्ट है. दैट्स नॉट सिंपल टू रिव्यू ऑल दैट कोर्स इन 2 months. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस सर, बहुत अच्छा आपने आंसर किया. मैं ऑलरेडी ASP और CSP की क्लासेस ले रहा हूँ कराची में ही, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 50,000 पे किए हैं तमाम प्रिपरेशन के हवाले से. और उसमें सेम एज आपने बताया कि पाकिस्तान में जैसे जस्ट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और थोड़ी सी कंसल्टेंसी आपको देंगे सिर्फ जस्ट फॉर हेल्प पर्पस, कि अगर आपको यूनिट्स का कोई इशू है या आपको अगर कोई जो है ना मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट का कोई मसला है या क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो, इस हवाले से थोड़ा सा वो कंसल्टेंसी हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. बाकी आपने जो एडिशनल चीजें बताई हैं एप्स की फॉर्म में, क्वेश्चन बैंक है और जो है ना आपका मटेरियल है, लेक्चर्स होंगे, इस तरह की डीप में स्टडी होगी, तो सर मैं तो समझ लें कि बहुत विलिंग हूँ इस मामले में कि मैं तो फौरी तौर पे ही ज्वाइन करना पसंद करूंगा आपके साथ भी इंशाल्लाह. बिल्कुल, क्योंकि आपको आइडिया, इसलिए आपको पता है कि 50,000 इज लाइक इट्स डर्ट चीप. ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत ज्यादा है, हर डोमेन को कवर करना, टाइम लगाना. तो सही है, आपके ये स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस और मैसेज शो हो रहा है, अगर आप कांटेक्ट कर लें. जैसे ही मेरा ख्याल है एटलीस्ट 5 लोगों की भी पॉपुलेशन होगी तो हम स्टार्ट कर देंगे. और ऑल्सो आप लोगों में से कोई ये बंदा मैसेज स्प्रेड करना चाहे, जितनी जल्दी हमारा वो एक ग्रुप स्टार्ट होता है उतनी जल्दी हम वो प्रोसीड करेंगे उसी हवाले से. लेकिन इन द मीनवाइल, सॉरी जी 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 इमरान भाई, have you done with the question or still you want to explain something? I think if it's satisfactory for Sikandar, then आप सिकंदर आप बस ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ले लें. We will get back to you soon इंशाल्लाह. और जब तक सेशन नहीं भी स्टार्ट होता है, if you need any help through phone, through Zoom meeting, आपको मैं वो हेल्प भी हम प्रोवाइड करेंगे. कोई ऐसी बात नहीं है, इतना वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है नहीं. इट्स जस्ट टू हेल्प पीपल. एक ब्रिज है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस चीज को, मुफ्त के पैसे ले रहे हैं. मैंने अपना बताया था, मैंने ASP करना था, मुझे 1.5 लाख एक बंदे ने मांगे और ही वाज जस्ट प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल. वो मटेरियल तो हम वैसे ही फ्री दे रहे हैं लोगों को. वो ऐसी कोई चीज नहीं. आपको इसके अलावा भी हेल्प चाहिए, वी विल बी हियर. कोई भी क्वेश्चन हो, नवीद भाई खुद ASP सर्टिफाइड है, वो इंशाल्लाह हम हेल्प करेंगे आप लोगों को. ठीक है सर, नो मोर क्वेश्चन मेरी तरफ से, बाकी आप कंटिन्यू करें. श्योर, थैंक यू. Okay, Ali, I have one question. जी. I have already told you 13-year operational experience. I would like to know how much ASP and CSP is effective for the operation or the production specialist, because normally in the field it is considered that these are beneficial only for the safety professional, not for the operation or for any other professionals. देखें, जो ऑपरेशन और प्रोडक्शन में होते हैं, ये तो आपका फील्ड के अंदर लोग काम कर रहे हैं, कोई भी एक हैजर्ड जनरेट होगा वहीं से होगा. तो जितना ज्यादा बेहतर नॉलेज हैजर्ड का ऑपरेशंस में होना चाहिए. मैं खुद ऑपरेशंस में रहा हूँ, नवीद भाई ने 8-10 साल ऑपरेशंस में किए हैं. तो ऑपरेशंस में रहते हुए ही मैंने CSP सर्टिफिकेशन की. और उसमें जी प्लीज, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ इमरान भाई. इसमें इस तरह है कि लाइक अभी जिस अली ने बताया कि मेरा खुद स्टाफ का भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑपरेशन के अंदर ही. तो इसमें आप जानते हैं कि जितनी भी सेफ्टी है वो इम्प्लीमेंट तो ऑपरेशनल इंजीनियर ने ही करनी है. सेफ्टी वाले ने तो जस्ट गाइडलाइंस देनी है, स्टैंडर्ड्स देने, ठीक है. बट एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उस पर टूल लगाना, ठीक है, PHA करना, PHA का टूल यूज करना, ठीक है, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, इमरजेंसीज को हैंडल करना, ये सब चीजें ऑपरेशनल इंजीनियर ने करनी. ये इसमें सेफ्टी का कोई हाथ नहीं.
ठीक, तो इस वजह से आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ऑपरेशनल इंजीनियर को जितना ज़्यादा ASP CSP सर्टिफाइड होंगे उतना वो ज़्यादा आपके ऑपरेशन में वैल्यू एडिशन करेंगे। सिमिलरली मैं ये जो को देख रहा हूँ इस वक्त PMI में, तो मैं ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर चला हूँ कि मैंने अपनी कंपनी के अंदर ASP CSP की जो है ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई है, ताकि लोगों का एक नॉलेज बैंक है वो इंक्रीज। तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन कि अगर आप ASP CSP ऑपरेशनल लीडर्स को भी लेकर चलते हैं। और बीइंग जैसा अभी अली ने बताया, हम दोनों साथ ही काम करते रहे पहले एंग्लो में भी, तो उसमें यह है कि हम दोनों ने ऑपरेशंस में रहते हुए ही ASP CSP किया था। हमने सेफ्टी में जाके ज्वाइन नहीं किया, बट एडेड हमें बेनिफिट क्या हुआ उस ASP CSP की वजह से, एंग्लो ने हमें लेवरेज दिया कि आप सेफ्टी में आ सकते, हम फॉर्म ऑपरेशन और सेफ्टी में चले गए। फिर इसी तरह मुझे EHS, जैसे ही मैंने ये सर्टिफाई किया तो मुझे EHS मैनेजर के तौर पर PMI ने ऑफर किया। ठीक है, तो ये चीजें डेफिनेटली ऑपरेशन इंजीनियर के लिए ही हैं, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ओके, थैंक यू। Acha, I want to ask a question here. Being a sciences student, my concern is this: what level of maths is involved in this certification? I mean, will a sciences student would be able to handle the questions or any scenario in the questions? And secondly, what time period would you recommend for the training or before you sit for the exam? अच्छा सर, आपका एक्सपीरियंस कितना है? I have about 4 years of experience. इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है? जी जी। अच्छा सही है। मैथ्स है जरूर, इतना नहीं है, मतलब आप ऑब्वियसली बैचलर्स डिग्री तो है। I mean I have done O levels और उसमें मैथ्स हाँ था। नहीं, कोई मसला नहीं होगा। मैं था। O लेवल A लेवल को पढ़ाता भी रहा हूँ, कोई इशू नहीं होगा, आप कर लो, दैट्स डूएबल। अच्छा अच्छा, चलो दैट्स गुड। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, लाइक जो नॉर्मली जो कैलकुलेशन इसमें जितने भी इन्वॉल्व हैं वो लाइक फॉर केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं जो सेफ्टी में है, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियर भी हैं जो सेफ्टी में है, वो भी पास करते हैं। ठीक है, तो वो बहुत बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो वो लाइक दिस इज फॉर एनवायरमेंटल साइंसेज, हर किसी भी लेवल का कोई इंजीनियर है या एनवायरमेंटल साइंसेज का स्टूडेंट है या डिग्री है वो कर सकता है, डूएबल है, वो बहुत इजीली, बस थोड़ी सी एफर्ट्स हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। हाँ, और जो अब हम लोग इंजीनियर्स भी हैं, हमें भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंजीनियर्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो एक ये थोड़ी चीज डिफरेंट है, थोड़ा नॉलेज आपको चाहिए इसको पास करने के लिए, और थोड़ी एफर्ट लगती है इसमें। ओके, थैंक यू। ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन हो? ओके, आई थिंक वी आर प्रीटी मच। या क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन और जो डिलीवर आप लोगों ने किया है। आई मीन like you mentioned के few of the organizations has been charging a lot from the students, जैसे कि वो I mean 100K plus charge कर रहे हैं और they are just giving the material like recorded presentation। तो हमें इस तरह की जो lectures हैं या webinars हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। like I am in early stage of my career, तो हमें जो knowledge है वो through इस तरह की companies ही पता लगती हैं। जैसे I mean पाकिस्तान में बहुत कम companies ऐसी हैं, जैसे निवोश के बारे में काफ़ी दफ़ा हुआ था कि वो लाहौर में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उर्दू बाज़ार से सर्टिफिकेट जो था वो प्रिंट करके दे देते थे और वो लाखों रुपया चार्ज कर लेते। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इसी तरह ये जो लेक्चर्स हैं या वेबिनार्स हैं इसको आप कंटिन्यू करें आगे भी, बिकॉज आज जो मुझे लिंक्डइन पे अटेंडेंस नज़र आई है वो तो काफ़ी ज़्यादा थी। आई मीन 50+ लोग थे हु वर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग दिस सेशन, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया है वो तो काफ़ी कम है। आई मीन इट्स हार्डली 10 जो तो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये सेशंस जो हैं ये आगे भी कंटिन्यू करें। नहीं, सेशंस असद हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ये वंस एवरी मंथ होगा और बेसिकली फ्री वेबिनार होगा। इस पे काफ़ी लोग इंडिया और सऊदीया में लोग 20,000 पर सेशन चार्ज भी कर रहे हैं, लेकिन ये फ्री होगा, इसका कोई वो नहीं। हम लोग अपना टाइम स्पेंड करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, कोर्स के लिए रजिस्टर करें ना करें, लेकिन वेबिनार के लिए लोगों को आगे जिसका कोई फायदा हो सके आप जरूर इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। हाँ, मैंने अपने सर्कल में इसको किया है।
मैंने अभी शेयर किया था ये वेबिनार ना, लेकिन आई थिंक नो वन रिस्पोंडेड नहीं, और डजंट शायद मैटर। कोई भी देखें, इंटरेस्टेड हमारा नहीं तो था। जो इंटेंशन थी वो यही थी, लोगों को रीच आउट करें ताकि किसी ना किसी की हेल्प आउट हो जाए। तो वो एग्जैक्टली ऐसा कोई नहीं, जितने भी ज्वाइन करते हैं इट्स गुड। बस यही है कि लोग करते रहेंगे तो हम वेबिनार करते रहेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे तो हम वेबिनार छोड़ देंगे, क्योंकि हम या भी, मैं आई एम सेल्फ आई एम अ मास्टर स्टूडेंट इन अमेरिका, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता स्पेशली एलोकेट करके वेबिनार करें। तो लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर लोग आएंगे तो ठीक है, वरना वो ऑब्वियसली फिर। बाकी सर इसमें ना हमारा जो, मैं छोटा सा ऐड कर दूँ, बड़ा अच्छा बताया अली ने कि हमारा एक्चुअल में इंटेंशन ये था कि हमने जब ये ASP CSP किया था, बट देन देयर वाज नोबडी टू गाइड अस के किस तरह लेके चलना है। बड़ा हमें हर्डल्स हुई इसको पास आउट करने में, और काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए। तो बट हमारा इंटेंशन ही यही है कि हम थोड़ा सा सपोर्ट करें लोगों को। इवन कि जैसा भी स्टार्ट में जब अली ने एक स्लाइड शेयर की थी, उसमें लिखा भी हुआ था कि पाकिस्तान के लिए अभी जस्ट 27 to 30 ASP CSP सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। तो वी वांट कि पाकिस्तान में लोग इस प्रोफेशन में और ज़्यादा मैच्योर हों और ज़्यादा आएँ, उसको समझें, क्योंकि सेफ्टी इज़ नॉट अ जॉब। ठीक है, ये मजाक नहीं है कि हम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, और इसको हमें सीरियसली लेना है, लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है, कि सेफ्टी को हमें ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे लेके चलना है। अभी भी रिसेंटली मैं देख रहा था, अभी 2 हमारे पास फर्टिलिटीज़ हुई हैं। एक मेरे ख्याल से ये एक हमारे पास प्लांट है पावर का, कोई मुझे भूल गया अभी, और वर्क एट हाइट पे करते हुए। तो ये दिस इज़ नॉट अ, मतलब कि लोग इसको सीरियसली हर नहीं लेते पावर प्लांट था पाकिस्तान ये में। सब। हाँ, मैं आई थिंक उधर ही हुई है। तो ये चीज़ें हमें सिर्फ लोगों को एजुकेट करने के लिए एक हमने नॉन प्रॉफिट वेबिनार स्टार्ट किए हैं, ताकि हम लोगों को सपोर्ट करें। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ASP CSP, इट्स वेरी इजी। जस्ट थोड़ी गाइडेंस की, थोड़ा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। अच्छा, ASP CSP के लोग थोड़े हैं और ट्रेनिंग भी कोई नहीं करा रहा, लेकिन जो सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट है वो ऑर्गेनाइजेशंस के फायदे में है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक एंग्रो फर्टिलाइजर्स और इस तरह, जो कि खुद इंसेंटिव लेके लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। उसका भी हमारे मुल्क में कोई सर्टिफाइड लोग गिनती के 10-15 होंगे, और वो कोई ट्रेनिंग तो करा ही नहीं रहा, और लोगों को गाइडेंस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है चीज़ क्या है। तो लोगों को पता हो तो शायद वो इस हवाले से सोच भी ले। और मैंने भी अपनी प्रेजेंटेशन में, आपने शायद सुना हो, मैंने बताया था कि एक तरह से $350 आपके कम हो गए सर्टिफिकेशन में। मैंने एक्स्ट्रा $350 दे के अपनी डिग्री वेरीफाई कराई थी अमेरिका से, क्योंकि हमारी डिग्रियां कोई मानता ही नहीं था। तो वो एक उन्होंने एलिमिनेट कर दी। अगर आपकी डिग्री पाकिस्तान से होगी, PEC से रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, कोई मसला नहीं। Just one question ओके। about the degree. अभी currently क्या criteria है डिग्री, like HEC से वेरीफाइड डिग्री जो है वो अपलोड करनी पड़ती है, या क्या क्राइटेरिया है अच्छा, करंटली? अगर आपकी डिग्री की फोटोकॉपी है तो वो HEC से अटेस्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर ओरिजिनल प्रिंट है जस्ट स्कैन चलेगा, उसमें और कुछ नहीं करना। ठीक। इसकी कोई इवैल्यूएशन करते हैं BCSP वाले? पहले करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे। वो कुछ यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की रजिस्टर होगी इनके पास। ये सेम है जिस तरह इमिग्रेशन के लिए वो लोग मांगते थे कि आप वेरीफाई करें WES वगैरह से, तो वो करवाना जी पड़ता जी। था पहले, लेकिन अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज को। तो एक बड़ी अच्छा, एक वो अच्छी न्यूज़ है। जब मुझे पता लगा तो एक तो दुख भी हुआ था कि मैं पैसे दे चुका हूँ लेकिन ये कि बाकी जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा है वो। बल्कि हमसे पहले, मैंने तो ऑनलाइन वेरीफाई कराया था, हमसे पहले जो हमारे सीनियर्स थे वो डिग्रीज फिजिकली भिजवाते थे हार्ड फॉर्म में। वो एक अलहदा धचका लगा रहता था कि डिग्रीज ओरिजिनल भिजवाई हैं तो क्या उनके साथ होगा। लेकिन अब ये बहुत सिंपल और हर प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, कुछ भी नहीं करना आपने। बस 2 वीक्स पहले आप रेडी रहें रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन फाइल करें। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बेहतर है किसी सीनियर बंदे को साथ रखें, क्योंकि एप्लीकेशन अप्रूव होना जरूरी होती है। I just want to compliment all of you. That was a very good effort, and इसमें जो एक सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि आपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया है। मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, हमारे कुछ कोलीग्स हैं, वो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं ASP की एक ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन उस बंदे ने जो स्टार्ट किया, वो उसके जो स्टार्टिंग कमेंट्स थे वो ये थे कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब एक फियर फैक्टर जो है वो, जब प्रेजेंटर
participants में दे रहा हो, मैंने इसीलिए अपनी I think it is presentation very में negative impact. इसलिए प्रेजेंटेशन में बताया था कि इसको ना ASP मिथ्स बनाया हुआ है। हम जब इंडस्ट्रीज में होते थे इसको मिथ्स बनाया। मे बी एक कुछ लोगों ने इसको प्रोफेशनल जेलसी की वजह से, या कुछ लोगों ने इसको इतनी हाइप बना दी है कि यार अगर मैं करूंगा तो लोग कहेंगे यार क्या बात है, इसने क्या कर दिया, तो इतना बड़ा उसको काम बना दिया। इट्स डूएबल, लेकिन एफर्ट है, हर चीज में एफर्ट लगती है। इट्स डूएबल। जी, thank you very much. कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो आप ये नंबर्स और ये चीजें देख लें, इस पे कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम एक और वेबिनार अरेंज कराएंगे, जैसे ही कोई टाइम मिलता है। कोई आपके दोस्त वगैरह ज्वाइन करना चाहे तो मोर देन वेलकम। I would like to personally thank Naveed Raza, Ali Ayub, and Ms. Sara for explaining us all about the certifications. और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, किसी का कोई फर्दर आगे वेबिनार के बाद भी, तो आपके सामने स्क्रीन पे फ़ोन नंबर भी, ईमेल आईडी भी और हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल आ रहा है। इस पे आप मैसेज करें अपना, कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सर्टिफिकेशंस, कोई बात पूछनी है, कोई मटीरियल के हवाले से या कुछ भी, तो विल बी देयर टू सर्व यू ऑल। और जस्ट आप लोगों से ये है कि हमारे कंपनी की जो प्रोफाइल है इसको शेयर करें, फॉलो करें और हेल्प अस ग्रो, क्योंकि हमारा जो वाहिद इंटेंट है वो आप सबके लिए आसानी पैदा करना है कि इस फील्ड में हम लोग कलेक्टिवली पाकिस्तान में, हम लोग आप पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम लोग इस चीज़ को आगे लेके चलें। तो थैंक यू टू ऑल माय प्रेजेंटर्स एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना टाइम निकाला और वेबिनार में हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ये एफर्ट्स हमारी चलती रहेंगी इंशाल्लाह आगे। Okay, at the end, I would like to thank Asif and Safe-Enviro कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया स्पेसिफिकली मेरी तरफ से स्पेशल अप्रिसिएशन है Safe-Enviro के लिए कि जो उनका इंटेंट है आगे लेके चलने का, हम भी इसका पार्ट बन रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ पर बड़ी खुशी हुई है कि हम ओवरऑल पाकिस्तान में इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, लोगों को मेच्योर कर रहे हैं सेफ्टी के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ फॉर इनवाइटिंग मी एंड अली एंड सारा in this webinar. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Please keep coming back to us. So with this note, I think I'm going to end the session and see you all around, inshallah, next time. Okay.